Dear students, today we will discuss an interesting shape of geometry called circle. आज हम ज्योमेट्री के एक स्पेशल शेप के बारे में बात करेंगे जो है सर्कल. कैन यू डिफाइन अ सर्कल? क्या आप सर्कल को डिफाइन कर सकते हैं? वी कैन डिफाइन अ सर्कल दैट इट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट which is equidistant from a fixed point. It means locus means path traveled by a point. If a point travels in such a way that its distance from a fixed point is always the same. अगर कोई point, suppose this is a point, if this point travels a path so that its distance from a fixed point is always same, it does not change. ये पॉइंट इस तरह से ट्रेवल करता है कि इसकी डिस्टेंस किसी फिक्स पॉइंट से हमेशा सेम रहती है, एंड दैट फिक्स पॉइंट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल विच यू कॉल द सेंटर, जिसको हम सर्कल का सेंटर बोलते हैं. अब आप जानते हैं सर्कल के सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं रेडियस. वी कॉल दिस फिक्स डिस्टेंस एज रेडियस. सो इट ट्रेवल्स इन सच अ वे दैट एट ईच पॉइंट ऑन दिस पाथ its distance from this fixed point is same. It does not change. This is called the radius. Now the question is, how many sides are there in a circle? When we define a polygon, we say that a closed figure made up of only line segments, and these line segments are called the sides of that polygon. जो पॉलीगॉन की डेफिनेशन आपने क्लास 6 में पढ़ी होगी, पॉलीगॉन एक क्लोज्ड फिगर होता है और उस क्लोज फिगर में सारी स्ट्रेट लाइंस होती हैं, उसमें कोई कर्व्ड पार्ट नहीं होता. इट डज नॉट हैव एनी कर्व्ड पार्ट, एंड दोज स्ट्रेट लाइंस आर कॉल्ड द साइड्स ऑफ दैट पॉलीगॉन. बट यहां तो दिख रहा है सर्कल में तो कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो क्वेश्चन ये है कि इसमें साइड्स कितनी है. ऑब्वियस आंसर आएगा 0. एक तरह से सही भी और एक तरह से गलत भी. जब कोई स्ट्रेट लाइन है ही नहीं तो हम कहेंगे कि इसमें कोई साइड नहीं है. बट इसको दूसरी तरह से डिस्कस किया जाए. सपोज मेरे पास एक स्ट्रेट वायर है. आई एम हैविंग a straight wire of or a thread of length 60 centimeter. If I want to make a closed figure out of it, then the minimum number of sides a closed figure can have is 3, which we call a triangle. If there are 4 sides, we call it a quadrilateral. If there are 5 sides, then we call it a pentagon, and so on. अगर मैं इस वायर से एक ट्रायंगल बनाता हूँ, if I turn it into the shape of a, let us consider only regular polygon. If I turn it into an equilateral triangle, each side of which is equal to each other, then the length of each side will be 20. I am having a 60 centimeter long wire. I turn it into a shape of an equilateral triangle, then each side will be of length 60 divided by 3, which will be 20. हर एक साइड 20 सेंटीमीटर की होगी. Now if I turn it into a regular shape having 4 sides, which we call a square. Square is a regular shape
all four sides equal and all four angles are equal, then it is a square. The length of the wire is same, which is 60 centimeter, which is the perimeter of this square. Then each side will be of 15 centimeter. If I turn it into a regular pentagon, let's say this is a regular pentagon, again its perimeter is 60, which is the length of this wire. Then the length of each side will be 12. So you can notice that as the number of sides goes on increasing, the length of each side goes on decreasing. In the same manner, if I will turn it into the shape of a regular hexagon having 6 sides, अगर मैं इससे एक हेक्सागन बनाता हूँ, रेगुलर हेक्सागन जिसकी साइड्स इक्वल होंगी, then the length of each side will be 60 divided by 6, which is 10 centimeter. So you keep on increasing the number of sides, the length of each side will go on decreasing. आप नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाते जाओ. इसी सेम वायर को आप 7 साइड वाला रेगुलर पॉलीगॉन बनाओ, फिर 8 वाला बनाओ. अगर मैं इससे 10 साइड्स वाला रेगुलर पॉलीगॉन बनाता हूँ, then the length of each side will be only 6. If I will make a regular polygon having 20 sides, then the length of each side will be only 3 centimeter. If still I keep on increasing the number of sides, suppose I am having a polygon having 100 sides, then the length of each side will be only 0.6 centimeter. अगर आप ऐसे ही साइड्स बढ़ाते जाओ, then you will notice then that length of each side, it means the distance between these 2 points, this goes on decreasing. Then theoretically we can say that there will be a state when you will get a circle. A circle can be considered as a polygon having infinite sides such that the length of each side is 0. So each point of this circle can be considered as the side of that polygon. So the length of a point is, we know it is 0. So I can say that a circle is a polygon having infinite number of sides and the length of each side is 0. I hope you are able to understand. Thank you.